Right. Mm. Hi, Mujib. Good afternoon. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Okay. Can you hear me? Yes, I can. First, very much for support. You're So I welcome. How much marks you received? Achieved? eight 800 80. Sorry to I forward with you. No, I have already received the screenshot for you You to see. already got this. Yes, I got it. Yeah, जैसे आपका एग्जाम खत्म हुआ ना मेरे पास ये डिटेल भेज दी थी उन्होंने. ठीक है. 808. 880 808. आउट ऑफ 700. Yeah. ठीक है, all good. Yeah. Done. So let's proceed. Yeah. Quick recap the topic that we completed in our previous class. What are the points that we discussed, and how many practicals that you have already performed from your side, which is important. आपने अपनी तरफ से कितने प्रैक्टिकल किए और हम लोग कौन से टॉपिक पे थे अभी? जी मैंने 25th में जो लास्ट वीक जो हम लोग का पढ़ाई हुआ था मैंने डीएल बनाया था उसमें यूजर बनाया था तो वो वाला प्रैक्टिकल हो गया है ओके. अच्छा एक बात पूछनी थी जो हाँ. एक तो मेरा एक 24 का एक क्लास जो हुआ था ग्रुप का हमने क्लास हुआ था हम्म. उसका मेरा रिकॉर्डिंग नहीं मिला है 24th फेब का नो. ठीक है नो प्रॉब्लम. सेकंड वन हम्म. सेकंड जो इंट्रा आईडी में और भी बहुत सारे आई थिंक पार्ट्स है वो जो हम लोग ने उसको कुछ कवर नहीं किए इंट्रा आईडी का इन अज्यूर का इंट्रा आईटी में लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट कि क्या क्या टॉपिक हमारे कवर हुए हैं. So in Microsoft Intra IT, we completed the part of Azure AD Connect. Azure राइट AD Join का भी पार्ट हमने डिस्कस किया था. Means how we can manage राइट वो भी Azure हो भी AD. गया प्रैक्टिकल भी हो गया Practical दैट भी इज हो डन गया था. And राइट we we also have seen the discussed user yeah component that is a component of our Intra ID. We already discussed about the component of Azure Intra ID. mm, no No, component in the sense जो services हैं yeah services yes we completed, right? uh yeah So can you please only the I think check there your is a notes. AD आप एक बार अपना okay नोट्स चेक करो एंड लेट मी नो mm, कि आपने उस नोट्स के अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉपिक किए हैं. देन लेट मी नो और फिर हम उसके mm, अकॉर्डिंग ही मैनेज करेंगे चीज़ों को. I think यहाँ पे इंट्रा आईडी का बहुत पार्ट मीन्स बहुत ज्यादा जरूरी है 365 फुल अंडरस्टैंडिंग के लिए ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट. लेट मी शो यू द टॉपिक दैट वी कंप्लीटेड सो फार. ये अपनी उस वाली क्लास का है. ये स्क्रीन अबाउट द प्रोटोकॉल्स जिसमें हमने प्रोटोकॉल के बारे में बात की थी. मीन्स राइट व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स रिक्वायर्ड टू migrate, synchronize our services from यस on premises to 365 portal, right? राइट Great. तो इसके अलावा और भी सिक्योरिटी भी बहुत सारे है ना जैसे एप्लीकेशंस अगर कौन सा एप्लीकेशन कौन सा कैटेगरी में हम लोग डीएलपी के थ्रू से कर सकते हैं सिक्योरिटी उस पे लगा सकते हैं वहां पे भी वहीं पे है वो या उसका टॉपिक दूसरा ही है Exchange admin center. Exchange admin center का पार्ट है वो जो अभी हम लोग ओ स्टार्ट कर रहे हैं ना. एक्सटेंशन है ना. हाँ ओके गॉट So these all गॉट are the part related to the security that we'll cover in our exchange admin center. So just go through the point that we discussed in our intra ID. So intra ID में अगर कुछ आपको लगता है कि like जब we missed some topics तो please let me know. I'll try to cover it क्योंकि मेरे हिसाब कैन से यू जस्ट वो शेयर द सारे स्क्रीन कैन यू जस्ट शेयर दैट already स्क्रीन shared, एंटर already आईडी shared, पोर्टल already shared. दैट पोर्टल Okay, your in the portal we just need to open 365. एंड एंटर आईडी This is our Microsoft Intra Admin Center, राइट right? राइट So go through the points that we discussed about the Intra ID. इसमें हमने users के बारे में बात की थी. We already talked about the groups, how we can manage our custom domain, how to assign the license, how to add a custom domain, add a license, और SSPR कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं. वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड राइट दिस पॉइंट ना. ये सारे टास्क हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं.
ओके, एमएफए आई थिंक एप्लीकेशन का हम लोग अभी नहीं किए हैं, राइट? Which application, sorry? I can see the The devices and options which are available. applications. Hmm. Yeah, applications. ओके, ठीक है, मैं आपको वो थोड़ा सा हिंट दे दूं कि इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, ठीक है? अबाउट द जी। एप्लीकेशन, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, ऐप रजिस्ट्रेशन एंड ये दोनों जो पार्ट है, इनका यूसेज जो है हम्म, रियल इन्वायरमेंट के केस में, वेन एवर वी टास्क परफॉर्म द टास्क ऑफ माइग्रेशन, जब भी आप माइग्रेशन का टास्क परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना? सो ओके, द माइग्रेशन इन द सेंस लाइक यू आर ट्राइंग टू माइग्रेट टेनेंट टू टेनेंट। आपका एक ओके, 365 का अकाउंट है, मेरा एक 365 का अकाउंट है, मैंने कुछ मेल बॉक्सेस तैयार किए हैं एंड आई वांटेड टू शेयर माय मेल बॉक्सेस विद यू। आपके अकाउंट से शेयर करना है या आपकी मेल बॉक्सेस हमारे अकाउंट से ट्रांसफर करना है, शेयर करना है, तो इस केस में इंट्रा आईडी कम इनटू द पिक्चर, और सॉरी, नॉट इंट्रा आईडी, सो इन दिस केस application. एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कम इनटू द पिक्चर। हमें एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन को uh, sorry, so in this case we are able to create our application registration and transfer the data, transfer the mailboxes from one machine to another machine, one account to another account, tenant to two tenant के केस में ऐप रजिस्ट्रेशन आएगा। दूसरा जो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, enterprise application, so in this case like n number of applications are available. See, we are able to find multiple applications are already Right, available. right. एक है WCD विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू द विंडोज कॉन्फ़िगरेशन डिजाइनर। थोड़ा सा मैं हिंट दूं कि इनका काम क्या है ना, Right, right, right. एप्लीकेशन का पार्ट जो है ना, यू कैन यूज इट फॉर Mm, द वेरियस रीजन इन द सेंस कि जब आप इंट्यून की चीज़ों को माइग्रेट करते हो, इंट्यून की चीज़ों को mm, आप सिंक्रोनाइज करते हो, लाइक okay, यू वांट टू सिंक्रोनाइज, नॉट सिंक्रोनाइज, यू वांट टू परफॉर्म द बल्क एनरोलमेंट। आप okay, बल्क इनरोलमेंट का टास्क परफॉर्म करना चाहते हो, सो उस केस में एक टूल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। द टूल नेम इज विंडोज कॉन्फ़िगरेशन डिजाइनर एंड बाय यूजिंग दिस mm, विंडोज कॉन्फ़िगरेशन डिजाइनर वी आर एबल टू synchronize the services. We are able to enroll multiple resources at a same time, एक सिंगल क्लिक पे हम इसको प्रोसीड करेंगे। और उस केस में फिर आपको नया okay. ऐप रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा एंड बाय यूजिंग दिस ऐप रजिस्ट्रेशन वी कैन परफॉर्म ऑल द टास्क। Okay, when we are doing that migration study, that time we will get it this, right? एग्जैक्टली, द ऐप रजिस्ट्रेशन Okay, और न्यू okay. एप्लीकेशन को क्यों कॉन्फ़िगर किया जाता है, कोई इन नहीं, पे भी कोई हम नहीं। लोग डिस्कस करेंगे। सो अभी हम उसी पेज पे हैं, माइग्रेशन वाले पेज पे है। 5 से 6 तरीके का माइग्रेशन है अपने पास एंड विल ट्राई टू Mhm. डिस्कस अबाउट ऑल द टाइप्स ऑफ कोई नहीं, माइग्रेशन। कोई नहीं। I thought कि we missed this point. नहीं 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 That's नहीं, why I asked you. नो 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 Okay, वरी अबाउट कोई इट। नहीं, कोई नहीं। मोस्टली इसमें जितने भी कंटेंट हैं वो हम कवर करेंगे, ठीक है? सब करेगा। Okay, ठीक है, thank you very much. We'll go move to our which is एक्सचेंज एडमिन सेंटर। in सो progress. Yeah, back to the yeah, exchange please. admin center, and over Yeah, exchange admin center we have already discussed about the what we can say, DL DL and dynamic. Yeah, 2 से 3 तरीके के अपने पास जो ऑप्शन थे, उन ऑप्शन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स टॉक yeah. मोर अबाउट द अनदर ऑप्शंस दैट वी हैव। जो अदर मैं क्यों ऑप्शंस है, पूछ रहा हूँ क्योंकि आज जो एग्जाम हो रहा था ना, हाँ, I can see that many questions it's coming on that intra admin and intra ID. That's ओके why, ओके ओके ओके, and application related हम्म and security, the like DLP, how to configure their DLP and what are the application you have to publish through that DLP and put the protection. हम्म। So that's why I ask you these questions on my mind. I thought I'll ask this. No issue. We'll go ahead with that next chapter. Okay. Okay. ठीक है, so let me check Yeah. another point. This is the panel of exchange admin center. We already completed the part of recipient. Under the recipient we discussed about the mailboxes, the number of the shared mailbox that we can create. About the group, we completed all types of group that we have, like 3 4 different types of groups you can find in our Microsoft Exchange Admin Center. So we should know about the Right. use cases of these groups. जिसमें हमने Microsoft 365 का ग्रुप देखा था, डीएल का ग्रुप देखा था, डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट ग्रुप और मेल इनेबल्ड सिक्योरिटी। ये अलग अलग ग्रुप्स हमें दिखाई पड़ते हैं अपने इस एक्सचेंज एडमिन वाले पैनल 360 पे। exchange admin. Right.
ये हमने पार्ट डिस्कस किया था, वी ऑलरेडी हो गया है। डिस्कस And अबाउट द I रिसोर्स. have done this. Yes, I have done this task also. Great. What about the resources? Why we need to create resource group? No, I did not create this because I didn't get that time. So there is a two resource. I believe the room resource and that equipment resource. Hmm. In room resource, like it's a event. If we have organizing any event, so we'll use in this case this will come any room resource. And equipment, if any device so assigned to particular on the meeting room or somewhere, so we'll use this AD add-on equipment resource. So I'll just do that, perform that. But you have a idea about the concept. हमने इसमें concept Yeah, पे yeah, discuss किया I था. know. It's understand. I have understand. Great. Yes. So these two different group can help us to the resource group contain two different services. One, you Yeah. can select the venue for the any occasion or for any kind of workshop or seminar. जब आप कोई location book Hmm. करते हो for the specific time, so that time Hmm. you just need to create a group, room resource group create करेंगे, और उस room resource group में जितने भी number of users हैं या employees हैं हमारे organization के, उनको हम submit कर Hmm. देंगे ताकि उनको notification मिलता रहे. The another part Hmm. of add an equipment resources. So add an equipment resource का मतलब as per the name suggests, in this case what you need to do in this case, you always fix the use cases of our resources. It may be applicable for printer, it may be applicable for projector या other कोई devices जो है जो आप specific department के लिए fix करना चाहते हैं, right? So that time you can Right. use this particular option. Equipment ठीक है. resource. Right. So what about contacts? What is use of contact? I think contact it's not cover. I think we discussed about the contact, like the use cases of contact, why we need to use the contact information. I think we started, but it's not finished. Maybe after break we are not continue. I believe. चलो ठीक है, कोई इशू नहीं. So let's start with Yes, yes. The contact is done, and we are in the mail flow. sorry. We are in mail flow chapter. Tell हाँ me तो mail flow. तो We have कांटेक्ट started the कांटेक्ट हो गया था तभी हम मेल फ्लो की तरफ मूव किए थे, राइट? right, right. ठीक है. सो कॉन्टैक्ट Contact. इज नथिंग. कॉन्टैक्ट की बात करें तो लाइक इट इज अप्लीकेबल फॉर द एक्सटर्नल मेल आईडी. Right. अगर आप किसी एक्सटर्नल मेल आईडी का इस्तेमाल करना चाहिए, किसी एक्सटर्नल मेल आईडी को गैल में, गैल इन द सेंस ग्लोबल एड्रेस लिस्ट में आप उसको एडजस्ट करना चाहते हैं, दैट टाइम द कॉन्टैक्ट कम इनटू द पिक्चर. एक तो ये इसका यूज केस हो गया. यू वांटेड टू ऐड अनदर व्हाट वी कैन से दैट यू वांट टू ऐड एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल आईडी, सो उस केस में आप इसका इस्तेमाल करेंगे. और साथ ही साथ इस केस में आप माइग्रेशन अगर आप करते हैं ना, सो वेन एवर वी परफॉर्म द टास्क ऑफ माइग्रेशन, जब आप माइग्रेशन का टास्क परफॉर्म करेंगे ना, सो उस माइग्रेशन के केस में भी आपको ये इस्तेमाल करना पड़ेगा. मीन्स यू कैन ऑल्सो यूज दिस पर्टिकुलर ऑप्शन इन केस ऑफ माइग्रेशन. Okay. There is one doubt for this. Like we have one activity last time we discussed with one of the colleague. He said ki, like we have the 100 people external user. How we send that event to them? Event like that mail. Sorry, can you please repeat again? There is a 100 event like there is a 100 external user. Okay, we need to send that email to them through that group. Yeah, we can do that. We need to create a kind of a rule, and according to the rule, we can transfer it. Okay, so we can add here add mail contact there only we can use, right? Exactly. You need to add the mail ID for the external user as a contact, Mm. and after that create group, and according to that you can send the multiple email to the multiple user at the same time.
फिर वो उसको आप ओके। उसमें मेंशन कर देंगे ना, डीएल वाले पार्ट में मेंशन कर दो, या आप शेयर्ड मेल बॉक्स में मेंशन कर दो, क्योंकि ये दो जो ग्रुप है ना, दीज टू ग्रुप्स आर एप्लीकेबल टू परफॉर्म द सेम टास्क। बस गैप इसमें क्या है कि जो शेयर्ड मेल बॉक्स है उसमें आपकी प्राइमरी मेल बॉक्स या प्राइमरी स्टोरेज के इस्तेमाल नहीं होते। एंड हम्म। सेकेंड, जो डीएल है, डीएल आपके ऑन प्रोमाइसेस मींस जो प्राइमरी मेल आईडी है ना, उस प्राइमरी मेल हम्म। आईडी का स्पेस इस्तेमाल करता है। ओके। और एक्सटर्नल के लिए हम लोग कॉन्टैक्ट यूज कर सकते हैं। हाँ जी, एक्सटर्नल के लिए हम कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करेंगे। पहले उस मेल आईडी को, उन सारी मेल आईडीज को हम अपने इस पर्टिकुलर पार्ट में मेंशन करेंगे। उन सभी मेल आईडी को ऐड ए हम मेल, ऐड ए कॉन्टैक्ट में ऐड ए करेंगे। मेल कॉन्टैक्ट। हम्म। ऑल गुड। एक ग्रुप बना के सारे ईमेल को ऐड करेंगे या सिर्फ पहले ईमेल को बस यहाँ पे ऐड करके फिर ग्रुप नहीं नहीं बनाएंगे? नहीं, पहले कॉन्टैक्ट को, ईमेल को कॉन्टैक्ट में एज ए कॉन्टैक्ट रखेंगे, और ओके। कॉन्टैक्ट में रखने ओके। के बाद फिर उनको ग्रुप में हाँ। डालेंगे। ग्रुप कहाँ से हम लोग बनाएंगे? अपना रेगुलर ग्रुप्स में जो जाके वो नॉर्म सब कुछ ले हाँ, जो लेंगे। नॉर्मल ग्रुप है वहीं से ऑप्शन है, उसी से हम ओके। क्रिएट करेंगे। ग्रुप सिलेक्ट करेंगे, वहां पे एक्सटर्नल ग्रुप बना के और सारे लोगों को ऐड कर देंगे, हाँ राइट? जी, बिल्कुल। ओके। सो मल्टीपल इसके यूज केसेस हो सकते हैं। एक तो ग्रुप का कॉन्सेप्ट हमने देखा कि जी। हमने इसको गैल में ऐड करने के लिए बनाया, और दूसरा जो है कि अगर आप मल्टीपल ग्रुप्स को, मल्टीपल यूजर को एक ग्रुप में रखना चाहते हैं, तो उस केस में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल गुड। सो ये अपने पास कॉन्सेप्ट हुआ। आप यू शुड ट्राई टू डू दैट। आप एक बार इसको ना कोशिश करना क्रिएट करने के लिए, एंड आफ्टर दैट विल राइट। डिस्कस अबाउट इट, क्योंकि हमने इसमें ग्रुप का पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड राइट। अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्टैक्ट वाली ईमेल्स को कैसे हम ग्रुप में रखते हैं। जी, वही जो है 24 का जो रिकॉर्डिंग है ना, मिस है, मेरे को वो वाला भेजिएगा आज। ठीक है। 24 का रिकॉर्डिंग, 24 फेब का, डन डन, सैटरडे। श्योर। ठीक है, वो हमारा ग्रुप का स्टडी उसी दिन हुआ था, उसी पे। नो प्रॉब्लम, सो विल सेंड इट। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द अनदर ऑप्शंस दैट वी हैव, जिसमें हमने एक डिस्कस किया था अबाउट द मेल फ्लो। अंडर द मेल फ्लो वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल। whenever we click on the mail flow it give us a multiple option, जिसमें से एक ऑप्शन है आपका मैसेज ट्रेस, रूल, रिमोट डोमेन, एक्सेप्ट डोमेन, कनेक्टर्स, अलर्ट, अलर्ट पॉलिसीज। सो ये अपने पास कुछ ऑप्शंस हैं जिन ऑप्शन की हेल्प से हम अपने मेलिंग इन्वायरमेंट को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? ओके। राइट। So I think we have already discussed about the message trace. What do you think about the message trace? In message thread, there is a 5 category of one is the quarantine, and we can see that what are the mails flow sent to receive and receive to sent user, Mm-hmm. like that one. In the message trace, we are able to find multiple options are available, and by using this particular task, we can manage our services. We can track the services. We can track the सर्विसेज और जो मेल कनेक्टिविटी है, मेल एक्टिविटी है, वो सभी टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं। Right. So we completed the part of track. Let's talk about the rules. So in the rule panel, in the part of rule panel, we are able to find multiple. We can create multiple rules as per our requirement. जैसे आप देखते होंगे कि मेल के अंदर ना बहुत सारी ईमेल्स आती हैं जिनमें डिस्क्लेमर रहता है।
आप मेल के लिए डिस्क्लेमर डिसाइड करना चाहते हैं कि हमारी ये जो डिस्क्लेमर मैसेज है सभी यूजर के पास इमीडिएट पहुंचे जब भी हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करें, राइट? सो अगर आपको रूल बनाना है डिस्क्लेमर के लिए या कोई ऑटो रिप्लाई का रूल बनाना है, सो यू कैन परफॉर्म दिस पर्टिकुलर टास्क बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, बाय यूजिंग द वर्क ऑफ आवर व्हाट वी कैन से दैट रूल। सो रूल वाले ऑप्शन पे जाकर के हम ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। सो लेट मी शो यू वन स्टेप वन